Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Tanya and welcome to another video. आज का जो वीडियो है मैं उसके लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ because this was a video जो मैं बहुत टाइम से करना चाहती थी since the time I knew कि हाँ भाई Urbanic is launching Savannah. So today we are doing a Savannah haul and I'm so excited for the products because the moment I saw the website, the moment I saw the products, I knew the vibe is me. Because the products literally feel so beautiful and I have so many things right here with me. I have dresses, I have handbags. By the way, Savannah also has some pretty amazing collection of handbags and jewelry. So it's like a mixed haul of a lot of things. And the fact that Urbanic just completed 5 years and they had their anniversary, so they launched Savannah. So they had some pretty amazing offers also going on. They have up to 50% off on a lot of products. I'll mention the sale dates and the coupon code that you can use for discount. So make sure करना कि आप वो सारी चीजें avail कर लो in the right time. And yeah, let's get started. I'm so excited to tell you guys all the products that I have. Okay, I'm gonna start with dresses because I am a dresses girl. I love dresses and I do a lot of haul for dresses. So this is the first one that I have. It's this very pretty orange and pink color dress. Now this is a little bright for me because I don't usually wear such bright colors, but when I wore it I knew that I'm in love because it looks so beautiful. So इसके नेक पे यहाँ पे जो बस्ट एरिया है उस पे थोड़ा सा रुशे डिटेलिंग है जो आपके बस्ट को प्रॉपर शेप देता है. देन पीछे यू हैव दिस होल रुशे काइंड ऑफ थिंग जो कि स्ट्रेचेबल है अगेन बहुत ज्यादा. And it's a maxi dress with this very gorgeous slit on the side. So I love all things slit. There was a time when I was wearing dresses which had only slits, and this one also has like a very gorgeous slit. So I knew I had to get this one, and this one is just so gorgeous. Here is how it looks. I'm in size small, by the way, for all the items that I'll be showing you guys, and this one is just beautiful. Like it has to be one of the most summery dresses I own. तो इसका जो material है that's mix of those polyester materials जो normally जिस material के Urbanic पे dresses होती थी वही same material की है इस पे भी Savannah पे. But I genuinely feel that this is a very summery dress that you can wear a lot in the summer season. So yeah, that's the first item that I got from there. Next up, we have this viral dress. I'm calling it viral because I have seen so many influencers, so many celebrities wearing it, and this is such a gorgeous dress. It's more like a corset dress because जो उन्होंने बस्ट एरिया पे फील दिया है वो थोड़ा वैसा है. एंड इसमें मैंने यूजुअली लोगों को मैक्सी वेरिएशंस पहनते हुए देखे हैं, but I wanted to go for a mini one, so I went with a mini one, and they were the only website which had like a mini one. So this is what it looks like. The neck has a very beautiful embroidery of flowers, and sleeves bhi isi embroidery ki hai of flowers. This looks so gorgeous. I'm in love with this one. इस पे मैंने एक शॉर्ट भी पोस्ट करा था रिसेंटली. अगर आप नहीं चेक करा तो आप कर सकते हो. हाउ इट लुक्स मैंने प्रॉपर्ली शेयर करा उसमें. बट हियर इज अ वीडियो फॉर यू गाइज इन केस यू हैवंट वॉच्ड दैट ऑफ हाउ इट लुक्स. एंड आई लव दिस वन. द कलर, I think the color suits me a lot. मुझे नहीं पता आप कमेंट्स में बताना कैसा लग रहा है, but this one genuinely feels that it was made for me because it is so beautiful. And this was the second dress that I got from them. Next up, when I saw this dress, I knew I have to get this because this was very different than anything what I ever have bought. So it's this satin kind of dress. Satin type का material है थोड़ा सा नीचे, but अंदर इसमें एक ऐसा ब्रालेट टाइप अटैच्ड है जो ऑलरेडी इसमें अटैच है. सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज वेयरिंग दिस काइंड ऑफ स्टाइल जिसमें ऐसा लगता है कि देयर अंडरगारमेंट इज शोइंग बट इट्स एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द ड्रेस एंड इट लुक्स लाइक दिस. I love the color. I have nothing in gray in my wardrobe, trust me on that. And camera पे इतना नहीं लग रहा होगा because it's very light gray also. But gray and white का combo looks so beautiful. Here is how it looks when I wear it. बहुत अच्छी लग रही है. मतलब ऐसा लग रहा होगा कि मैं तारीफ फालतू की कर रही होती, बट जेन्युइनली गाइस मतलब मैं बहुत खुश हूँ अपनी परचेजेस से. बहुत रेयर ओकेजन्स होते हैं जब मैं कुछ खरीदती हूँ मुझे लगता है यस दिस इज समथिंग आई हैव डन राइट एंड दिस गिव्स मी दैट फील ओ या दिस इज समथिंग आई हैव डन राइट बिकॉज इट लुक्स stunning. And I mean again in size small, and I think ये ऐसी ड्रेस है जो आप ब्रंचेस पे जा रहे हो, ब्रंचेस से लेके इवन फॉर अ डेट नाइट यू कैन स्टाइल इट फॉर बोथ द वेज. डेट नाइट पे जा रहे हो तो अच्छी से सिल्वर एक्सेसरीज पेयर अप कर लो, एंड अगर ब्रंच पे जा रहे हो तो कीप इट अ लिटिल लाइट, white accessories pair kar lo, flats pair up kar lo. So just a mix of both the things and you'll be good to go for this. Next, I have a bodycon dress. I have a lot of items, guys, so it's gonna be a huge haul, long haul. So yeah, this bodycon dress is the next item that I bought, and I love this bodycon. I wore it for my birthday brunch, and I have to say that I got so many compliments even from you guys. I posted a get ready with me also, and you guys loved it. So yeah, this was the dress, and I love the
print of this one because बहुत ही ancient AD type print है ये, and I really enjoy something like this because the prints are not very common and something that you will see every other day, every other person wearing. So it's a different kind of print, and the feel is altogether very different of this dress. This is how it looks. Now a lot of time bodycons जो होती हैं बहुत uncomfortable होते हैं, but this is just one of those bodycon that fits you perfectly and you know that you can wear this often. So this is how the dress looks, hugs the body at the right places, and there is no complaints from this dress. Definitely one of my favorite picks from this haul. I got this very gorgeous black maxi dress. Now it is a little टायरसम टू वेयर क्योंकि इसको जब पहनना है तो इसमें पीछे काफी बांधने वाला झमेला है, एंड मुझे ऐसा लगता है ऐसी जो ड्रेसेस होती हैं थोड़ा सा झमेला हो जाता है बिकॉज आप अकेले अगर पहन रहे होते तो समझ में आता है कई बार कि कैसे पहनो, लेकिन एक बार फिगर आउट कर लिया कि कैसे पहनना है, दिस विल लुक सो स्टनिंग. इट्स अ टियर ड्रेस एंड पूरा प्रॉपर मैक्सी है ये, और इतनी खूबसूरत लग रही है. इसको मैं पहन के दिखाती हूँ बिकॉज ये ऐसे तो समझ में आई नहीं बिकॉज दिस इज ह्यूज, सो इट विल कवर द एंटायर स्पेस ऑफ द स्क्रीन, बट दिस इज हाउ इट लुक्स. एंड oh my god, this looks straight out of a fairy tale but in a black variation. So I genuinely enjoy this, and I feel that this is just one of those dresses that you can style in so many different ways, again from date nights to like farewells to proms, a lot of different occasions where you can wear it, and even regular wear mein if you want to give it a very casual vibe, ek aapne sling bag le liya tan color ka with some tan flats and you will be good to go. Next, I got this black and red corset top. I love corsets. You all probably know this by now. And this one actually felt the color जो मेरे पास नहीं था. I have a lot of corsets in like bright colors. Urbanic से लिए थे मैंने बहुत टाइम पहले काफी. But when I saw on Savannah तो मुझे बहुत अच्छे variations दिखे इस पे corsets के, tube tops के. So I went ahead and bought it. तो इस पे पूरा lace detailing है on the neck and on the straps as well. And बीच में again there is lacing that you can adjust and tighten it as per you. This is how it looks. Now if you're not someone who likes skin show, this might be a little revealing for you because your undergarment would be visible in this, but I am okay with anything as long as I enjoy wearing it. So this one was the next item that I got, and I genuinely like wearing this a lot. Next, I got a bralette by them, and this was actually a little bit of disappointment because इसका एक side बहुत loose था मुझे, so I had to tie a knot on this ऐसा bow shape में, so it actually doesn't slip off क्योंकि ये पूरा गिर रहा था otherwise. So otherwise I'm happy with this because it's comfortable, it's super stretchy, and दूसरे साइड पे सही था एकदम, बट एक साइड पे ये बहुत ज्यादा लूज था and was just falling off my shoulder every time. So I just tied the knot. knot बांधने के बाद सही हो गया. So अगर आप ऐसा ले रहे हो तो आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, but overall this was fine and this is how it looks. नॉर्मल घर पे पहनने के लिए, a lot of tops जिसमें थोड़ा सा deep neck हो but you wanna wear something white में bralette style में, तो you can wear it. If you're going on a beach, just pair up a shorts with this, so you can again wear it in a lot of ways, but I'll just say you have to do the जुगाड़ because इनका एक साइड का ये बहुत ही गड़बड़ था. Next, I got a pair of jeans and it's an embroidered jeans. I don't have any embroidered jeans. This is the first embroidered jeans I own. And इसमें ना साइड में ऐसी बहुत प्यारी सी butterflies and heart bun in purple and white color. I got it for the color also, and because since I didn't have anything embroidered, I'm in the waist 28, size small, and it's just perfect. मतलब नीचे से wide है, fit perfectly होती है on your ass, on your waist, and this is how it looks. I love a jeans which is well fitted, and this is one of the most well fitted jeans I own. मैंने Urbanic से जब shopping करती थी मैंने कभी भी उनसे jeans वगैरह ज़्यादा नहीं ली थी. And same for Savannah. I was a little confused if I should go for jeans or not because I wasn't very sure. It was my first time shopping from Savannah. But they have impressed me. Like being from Urbanic, I know they're Urbanic's child in a way. They have impressed me with the jeans और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ of how it looks. Definitely with the bralette also this looks very nice. मैंने जो पिछले शॉप में bralette पहनी मैंने उसी के साथ ही स्टाइल करा है and this looks okay. The last clothing item is a coordinate set. My shopping from Savannah और Urbanic जब हुआ करता था, मतलब अभी भी है, but since now all the good chic stuff is on Savannah, my shopping would have been incomplete without coordinates. I used to shop so many coordinates from Urbanic, so I had to get something from Savannah to see if it matches the quality, and it does. It does live up to the name. That Savannah by Urbanic, it does live up to the name. So I got this one. It's a cotton coordinate. थोड़ा सा मुसा हुआ है because I wore it yesterday and I forgot to iron. But it's in this cream color and इसमें side में lace detailing है, नीचे भी है, sleeves पे भी है, and it comes with a matching pair of shorts. I'm just gonna wear it and show you guys because मैं नहीं चाहती मैं इसका मुसा मुसा दिखाऊं यहाँ पे. But yeah, this is how it looks. I love these kind of coordinates.
डे टू डे लाइफ में पहनने के लिए, एवरीडे पहनने के लिए इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज इतनी गर्मी है, शॉर्ट्स पहन लो, अंदर टैंक टॉप पहन लो, ऊपर से ये डाल लो, यू विल बी गुड टू गो माई फ्रेंड। आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, कोई स्टाइलिंग नहीं सोचनी है, कुछ नहीं करना है। एंड ये एक ऐसा आउटफिट है जो आप बाहर पहन के भी जा सकते हो, घर पे भी पहन सकते हो, रनिंग एरेंड्स है तो भी पहन सकते हो, फॉर एवरीथिंग दिस इज वन आउटफिट दैट यू कैन वेयर everywhere. Okay, next up we have some bags and accessories. So let's get started with the accessories. The first accessory I'm actually wearing, and I'm talking about these pearl dangler earrings. I love them. They are so beautiful and stunning. Very delicate looking, and मैंने सोचा जब मैं haul कर रही हूँ तो मैं पहन के कर लेती हूँ इन्हें. So I think I got them for like 200 rupees or 250, but the quality is literally something that will beat H&M and Zara because इतनी amazing quality थी. And मुझे इनकी best part लगी कि they send like a extra pair of पीछे जो हुप अटैचमेंट होता है, मतलब बक्कल बेसिकली, जो जिससे भी बंद करते हैं रिंग्स, दे सेंड लाइक एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इट बिकॉज आई एंड अप लूजिंग माई पीछे का क्लोजिंग जॉइंट एवरी टाइम. सो आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेयर भी है. एंड आई लुक एट दिस, you can style it with so many things, and pearls are always in fashion, so definitely a very cute pair. I also got a mobile cover because Savannah has some great variety of mobile covers, very Pinteresty I would say. So I got this one. It has like butterflies all over it and बहुत प्यारा सा grey color में है. ये अभी मेरे phone पे लगा नहीं है because मेरा phone इसमें लगा है to shoot, and I just wanted to show you guys how this looks. So yeah, this was the phone cover that I got. They have, मतलब if you have to go for accessories, please check them out once. बहुत ही amazing सी, and the phone covers especially have my heart. Now let's move to that one segment of this haul जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ, and that's handbags. Got 3 of their handbags में से purses, and I love these handbags because मुझे ऐसे बहुत टाइम से चाहिए थे. So let's get started with the first one. सबसे पहले मैंने ये metallic finish में, silver finish में लिया है, and मेरे पास silver में है, but I think ऐसे bags party wear में बहुत ही ज़्यादा काम आ जाते हैं. I'm gonna show you a picture of how I styled it on my birthday. So I carried this on my birthday with a black satin dress, and it looked stunning. So whenever you want to wear like a blingy thing या कुछ blingy accessory add करनी है, I think एक blingy heels and एक blingy bag add करो, you will be great to go. So I got this one. इसके अंदर जो space है वो इतनी है कि आपका phone, wallet ये सब आ जाए. It's not huge, but it is spacious to keep everything that you require. एक you know event के लिए या एक party के लिए, एक function के लिए I would say. So it's just perfect. I love the metallic finish. The quality also quite good. So I'm very happy with this one. मैंने इससे बहुत similar एक और bag लिया है, which is in this black finish. This is a mini bag, I would say. बहुत cute, छोटू सा. Now मेरे जितने भी black shoulder bags हैं वो सब खराब हो चुके थे. So I wore this on my birthday brunch also. मैंने इसका inauguration तब करा है because I received I think all of them by April mid, and I wanted to make this haul क्योंकि May के starting में ही. And it has this very cute buckle detailing side में in golden finish, which I really like. Again, इसके अंदर स्पेस इतना है कि आप अपना वॉलेट, फोन, अपना लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, ऑल दैट फलाना धमाका सब डाल सकते हो. एंड आई जेन्युइनली लव दिस सो मच. ये बाय द वे वो जो क्लॉथ मटेरियल होता है ना, ये उसमें है. द सिल्वर वन वाज इन लाइक प्लास्टिक फिनिश, बट दिस इज दैट क्लॉथ मटेरियल, सो इट्स वॉशेबल ऑल्सो. आप इसको धो भी सकते हो, एंड सुपर लाइट वेट. इतना हल्का है, पता भी नहीं लग रहा. मतलब मेरी इयररिंग से ज्यादा हल्का इस टाइम के बैग है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है. आई गॉट वन लास्ट बैग फ्रॉम देम, एंड दैट इज दिस पर्पल स्लिंग बैग, जिसको आप शोल्डर बैग में भी कन्वर्ट कर सकते हो. सो द स्ट्रैप इज एडजस्टेबल, तो आप इसको शोल्डर में ले लो या आप इसको स्लिंग में ले लो, वट एवर वर्क्स आउट फॉर यू. आई लाइक टेकिंग इट एज अ शोल्डर बैग, सो इसलिए मैंने अभी शोल्डर लेंथ का एडजस्ट कर रखा है. एंड इट्स दिस बॉक्सी डिटेलिंग. ऐसा लग रहा है पाव रखे हुए हैं यहाँ पे छोटे छोटे, बट आई लव दिस बॉक्सी डिटेलिंग एंड फिनिश. अगेन द फिनिश इज सुपर गुड, एंड दिस इज एक्चुअली स्पेशियस. इसके अंदर आप काफी सामान भर सकते हो. सो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस जो थोड़ा सा हटके हो इन लाइक लाइलैक कलर. इसमें और भी कलर्स थे. दे हैड लाइक अ पिंक, black, brown, if I'm not wrong. So, but I went ahead with lilac because I really wanted a lilac bag. So yeah, that was the next item that I got. Overall, if I have to rate Savannah, I'm actually very happy with my purchases because it's new. एंड दे हैव अ वेरी फ्रेश अप्रोच टू क्लोथ्स. जो मतलब अभी तक मैं देखती आ रही थी अर्बैनिक पे, तो वही अप्रोच थोड़े और फ्रेशर फॉर्म में है. सो आई रियली एंजॉय दीज काइंड ऑफ क्लोथ्स. एंड आपने सारा कलेक्शन खुद ही देखा, तो यू can see how Pinteresty and aesthetic all of these items are. Do comment down below and tell me कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा. And Savannah is now live. Savannah पे बहुत amazing से offers भी चल रहे हैं. I'll make sure I mention all the offers in the description as well. और यहाँ पे तो कर ही दूंगी. Don't forget to use the coupon code for discount on Savannah. And I hope you guys liked it. Do comment down below if you want another Savannah haul, or if you want me to review anything specifically for Savannah. I'll make sure I'll do that. Until next video, don't forget to like, share, comment, and subscribe. I'm gonna see you super soon with another video. Until then,
And bye guys, take care.